हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज माय एसईओ रेज्यूमे ब्लॉग। तो आप ये रेज्यूमे यूज़ कर सकते हैं। आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसमें सबसे पहले आपका नाम, योर नेम शुड कम, देन डिटेल्स अबाउट यू, योर फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम, वेबसाइट डिटेल्स, यूट्यूब चैनल एक्सेट्रा। देन प्रोफेशनल समरी, यहाँ पे फ़ोटो भी आ सकती है, फोटोग्राफ भी आ सकती है यहाँ पे। देन यहाँ पे प्रोफेशनल समरी, हाई स्किल्ड एसईओ। हाँ जी, प्रोफेशनल समरी एक्सेट्रा। तो इसमें एसईओ में स्किल्स आपकी क्या हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एक्सेट्रा, बैचलर डिग्रीज, जो भी आपने किया है अपनी डिग्री में, रिसेंटली अपवर्क पे काम किया है तो वो उसके बाद डाल दो। तो उसके बाद जो समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स आते हैं, डैडवर्ड, मेजेस्टिक, एसईओ टाइमर, बेसिक नॉलेज ऑफ सीएसएस, डब्ल्यूपी वो भी काम में आ जाएगा, और सर्टिफिकेशंस जो करी हैं ये लिंक भी डाल सकते हो। लास्ट कंपनी डिटेल्स एटसेट्रा, उसमें एक्सपीरियंस जो उसमें काम किया 7-8 वेबसाइटों में वो डाल दो। और फिर ये अपवर्क का एक्सपीरियंस है, आई पुट अपवर्क एक्सपीरियंस 7 वेबसाइट्स, 20 clients I've worked for, but I put 7 websites here. Then New Zealand client details, Fly Media, etc. So this I'm attaching in the link. You can go and download this resume and like and subscribe. Resume. सो गाइस, एक एसईओ का रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ माय रिज्यूमे आफ्टर 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन एसईओ। तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, देन फर्स्ट यू हैव शुड हैव द नेम, देन लोकेशन, and the phone number be you can put over here, then email id, then Quora or your YouTube channel link, website link, etc. Then Instagram followers. So I have written professional summary uske baad. So in professional summary I should write highly skilled, and this is my experience with proven track record of improving online visibility, organic traffic, seeking a challenging role, then education and degree, school, etc. And how much after that, how much you have made on Upwork or etc. Anything else, YouTube channel views, whatever you have, Quora, etc. Then skills जिसमें आ जाता है skill set, what you can do in web designing or SEO tools, what knowledge you have. Like I have AdWords, SUP Timer, Majestic, Google Search Console. So I'm attaching this resume certifications. You can put the certification links, then experience after that. So I have this is my last company, एक और experience I put over here. And over here you can mention pay and date of joining. And you should have work experience. So the websites which I have, I can write about them. These are the websites I have done, and these are some of the links which I've built for the websites, team handle, etc., etc., etc. Then uske baad freelance. I've written about my freelance Upwork experience in these websites. Then before that, some other experience for a New Zealand client. Then before that, I was in BPO उसके बारे में. So this is how a resume should be, guys. I'm attaching this link, so you can download it. एक और sample भी है resume का. So there's another sample also. I will attach that also. So guys, subscribe and help me my channel. My channel name is Varun Kumar riat SEO and review guy. This is the channel, Varun Kumar riat SEO and review guy, and subscribe कर देना और like कर देना. So guys, thank you very much, and the link